Hello students, today I am going to start new chapter number 9, short run equilibrium output. As the name of the chapter, short run means short period. Equilibrium output means here equilibrium means it is that situation where is no tendency to change in anything. So in this chapter we will discuss that in the short period how we will determine equilibrium level of output. So here we are having two approaches. First one is aggregate demand and aggregate supply approach, and second one is saving and investment approach. So first of all, here is a definition. What is equilibrium income or level of national income? As we discussed in the previous chapter, what is aggregate supply and aggregate demand. So here equilibrium is at that point where aggregate demand is equal to aggregate supply. At the same point, equilibrium struck when saving is equal to investment also. See here AD. We know that we are having four components of aggregate demand: C plus I plus G plus net exports. Here we are assuming that we are taking two components because here is a closed economy, and aggregate supply, that is equal to C plus S. We can put C plus I in place of AD and C plus S in place of AS. So C is a common, we can cut that, and now it will be remain I is equal to S. I means investment, S means saving. Means equilibrium will be determined where AD is equal to AS and I is equal to S. So here is two approaches which we will do study of that. Before to discuss this topic, AD AS approach and S and I approach, you should know about some definitions here. First definition, voluntary unemployment. Unemployment here means it is a situation in which a worker is not willing to work at the current rate of wages. Means वर्कर जो है वो रेडी नहीं है वर्क करने के लिए, बिकॉज जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डिमांड है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी. So here we say that it is a situation in which worker is not willing to work at the current rate of wages. Opposite of it, involuntary unemployment. In this case, worker is willing to work at the current rate of wages but does not get work. Workers ready है काम करने के लिए, but work is not available in the market. सो इन दैट केस जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उस केस को हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. राइट स्टूडेंट्स? सो आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट, it is at that point where consumption is equal to income in the economy, or you can say that in the macroeconomics, because we are studying about the macroeconomics, we are studying about the whole economy. So here break even point means whatever the income of the consumer there, all that income they are spending on their consumption. So that's why break even point कहाँ पर होगा, जहाँ पे कंजम्पशन इक्वल किसकी होगी, इनकम की. राइट, गॉट इट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज here I was talking about कि in this chapter we will discuss about equilibrium where AD is equal to AS, means two approaches are there. Today we will discuss about AD and AS approach.
This is also called a Keynesian model of income employment with AD and AS approach. Keynesian model, Keynesian is the name of the economist. According to this Keynesian, where equilibrium will be determined, where AD is equal to AS. तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम in an economy is determined when aggregate demand is equal to aggregate supply. Here we are using aggregate demand. Aggregate क्या होता है, total demand. किसकी total demand? Demand of whole economy. Similarly, aggregate supply means supply of producer by the producer total supply. राइट तो ये आपके पास था. नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. सो हेयर इज अ शेड्यूल. अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल, एज यू नो दैट AD इज इक्वल टू AS. तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई, AS इज इक्वल टू C प्लस S. तो हम यहाँ क्या लेंगे, वी विल टेक अ कॉलम्स Y C I S AD प्लस AS. ये लिया हमने. तो Y here when income is 0, there is a minimum consumption, as I explained you in previous chapter. There is a minimum consumption. Here we are taking 20. 20 means this is autonomous consumption. And what is autonomous consumption? When income is 0, there is a minimum consumption. And this consumption is using by their past savings. They are using their past savings, or you can say that they are borrowing money from the others. So that's why यहाँ saving क्या है हमारे पास, negative है, right? After that, when income is increases 0 to 20, consumption also increases. Again income increases 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80, 100, 100 to 120. Consumption is also increases 20 to 50. Next is I. See here, I is 10 and it is showing constant. यहाँ पर हमने I constant क्यों लिया है? Because we are consider that, assuming that here I is a induced investment. And what is induced investment? Means if income increases, income decreases, or even income is 0, investment remain constant. Means income में change होने से investment में कोई changes नहीं है. That will be remain constant. That is 10. C plus I. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, AD. AD में हमारे पास वी आर टेकिंग 2 कंपोनेंट्स C प्लस I. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, C प्लस I मीन्स 20 प्लस 10 दैट इज़ 30, 25 प्लस 10 35, 30 प्लस 10 40, 35 प्लस 10 45. Similarly 40 plus 10 50, 45 plus 10 55, 50 plus 10 60. So we will get AD. ये तो हमारे पास AD आ गया. Now we have to find AS. And AS having 2 components C plus S. Consumption is given. हमें क्या फाइंड आउट करना है, S. और S कैसे फाइंड होता है हमारे पास, Y इज इक्वल टू C प्लस S मीन्स Y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. अब हमें इनकम भी गिवन है, कंजम्पशन भी गिवन है. वी कैन ईजली फाइंड आउट सेविंग मीन्स इनकम माइनस कंजम्पशन. सो फर्स्ट इज 0 minus 20 minus 20. So it means we are using past savings. If saving is negative, it is assuming that here saving will be negative. We are using past savings or borrowings from the others. Similarly, next 20 minus C means 25, that is minus 5. 40 minus 30
minus plus 10, then 60 minus 35 plus 25, 80 minus 40, 40, 100 minus 45, that is 55, and 120 minus 50, that is 70. Savings आ गई. Now you can easily find out AS. हमें क्या चाहिए होते हैं? C plus S. Now we are having both values. Now add this. 20 plus minus 20 means 20 होगा, that will be 0. 25 minus 5, 25 is 20 sorry, then 30 minus 40. अब 30 है हमारे पास एंड यहाँ पे सेविंग कितनी गिवन है हमारे पास 10, तो दोनों हमारा प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 40. 35 plus 25, that is 60, then 80, 100 and 120. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें इनकम जो हमें गिवन है दैट इज़ 0, 20, 40, 60, 80, 100 and 120, which is equal to AS. 0, 20, 40, 60, 80, 100 and 120. So AS curve always at a 45 degree. हमेशा जब भी आप AS कर्व बनाओगे और इनकम कर्व यू विल ड्रॉ, इट विल बी ऑलवेज अ 45 डिग्री. फाइन. नाउ you have to draw this AD and AS with the help of this schedule. तो हमने देखो यहाँ पे डायग्राम बनाना है. In the diagram given, on the x axis we will take income and on the y axis we will take AD and AS. हमने इनकम को लेना है and AD. With the help of income and AD we will draw AD curve and it will always start from y-axis. It always touches to the y-axis because we are autonomous, some autonomous consumption is there. After that आपके पास AS है, AS is a 45 degree. हमने y लिया है और AS की help से we draw this diagram. Fine. Now after that you have to explain this diagram. Now see this, in this diagram equilibrium, where is equilibrium? Equilibrium is there where AD is equal to AS, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया. तो AD is equal to AS हमारे पास क्या है? On the Y income, when the income is 40 and AD हमारे पास क्या है? That is also 40, AS is also 40. At this point both AD is equal to AS, that is 40. This equilibrium point is also called a break-even point, right? So this is a one mark definition is here. So what is the break-even point? This point where AD is equal to AS, that point is called break-even point. जैसे अभी मैंने आपको पहले definition में बताया है. Before this equilibrium point, see there, AD is more than AS. Means demand ज़्यादा है किसी चीज़ की और सप्लाई कम है. इफ़ द डिमांड इज़ ग्रेटर देन AS, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम अपने सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं. और कब तक इंक्रीज़ कर सकते हैं? अप टू दैट लेवल, जब तक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं पहुँच जाता. सिमिलरली इफ़ AD इज़ लेस देन AS, तो AD इज़ लेस देन AS मीन्स सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है. तो इन दैट केस वी विल नॉट प्रोड्यूस गुड्स मोर, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड कम है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपनी सप्लाई को कम करेंगे. और कब तक कम करेंगे? जब तक ये इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं पहुँच जाता. सो हेयर स्टूडेंट्स, सो सी हेयर, इधर आपकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, दैट इज़ बिलो द डायग्राम इज़ गिवन हेयर. You have to explain this diagram first of all. After that, here second paragraph, when AD is AS. अब इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कई बार डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाता है. What happened when AD is more than AS और AD is less than AS? तो यहाँ पर क्या मतलब है हमारे पास? AD is equal to AS. AD means डिमांड ज़्यादा है. Suppose that demand of goods are more but supply is very less. Then what you will do? Means
it means buyers are planning to buy more than what sellers are expecting. तो now supply is less, तो supplier क्या करेगा? Supplier is ready to increase the stock of goods. वो stock को increase करेगा और कब तक increase करेगा? Up to that level, जब तक कि वो equilibrium level पे नहीं पहुंच जाता. After that, in the third case, when aggregate demand is less than aggregate supply. सपोज करो आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है बट डिमांड इज़ नॉट देयर. इट मीन्स दैट इज़ डेड स्टॉक फॉर यू. डेड व्हाट इज़ दैट डेड स्टॉक? मीन्स डिमांड ज़्यादा हो रही है और वो स्टॉक आपका यूजलेस पड़ा है. इन दिस केस यू विल नेवर प्रोड्यूस मोर गुड्स. आप यही चाहोगे कि मेरा ये स्टॉक किसी भी प्राइस पे निकल जाए बट निकल जाए. तो इसमें हमारे पास होगा टू मूव बैक स्टॉक टू डिज़ायर लेवल, प्रोडक्शन डिक्रीज विच लीड्स टू फॉल इन इनकम. इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी एंड इनकम विल कीप ऑन फॉलिंग टिल इक्वल इज रिस्टोर एट पॉइंट ई वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस. तो आप देखो दोनों कंडीशन, वेन एवर ए डी इज ग्रेटर देन ए एस और ए डी इज लेस देन ए एस, इन बोथ कंडीशन दोनों लास्ट में कहाँ पहुँचे? दे रीच एट देयर इक्विलिब्रियम लेवल वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस. तो इकॉनमी में वट एवर द सिचुएशन इज देयर इट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट. वो अपनी सिचुएशन पे आ ही जाएगा. सो कंक्लूजन इज दैट when AD is equal to AS, the economy is in equilibrium and there is no tendency to change in income. So equilibrium का मतलब ही यही होता है, means that it is that point where is no tendency to change in equilibrium. So student, I hope you understand it very well. So thank you so much.